स्वागत है तुम्हारा। आज खोलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे ट्रायंगल्स का ढोलक। मैं हूं अमित मोदक। Very, very welcome to this amazing video, my lovely students. Yes, today we are going to beat the dholak for the triangles and its properties. और ये हमारा lecture number 2 होगा. And this would be of your comprising grade 7 and 8. तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ढोलक लिखो, ढोलक। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के। इस चैप्टर को बहुत लोग अवॉइड करते, सोचते बहुत टफ है, बट लेट मी टेल यू, बहुत ही इजी चैप्टर है अगर हम लोग इसको अच्छे से प्रॉपरली समझते हैं तो चलो फिर कुछ प्रॉपर्टीज को देख लिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा ट्राइंगल में 3 साइड्स है, जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर पे, लास्ट वीडियो पे, जिसका पूरा डिटेल्स उसका लिंक दिया हुआ है, और वो you can just look into that complete video. So we have learned about the triangle, their types, their different properties, and we will be adding some more properties today. So in that triangle, we have learned about the different types of triangles on the basis of side, like your scalene, isosceles, and equilateral. So there is a property of triangle inequality that says that sum of the length of any two sides for having a triangle, for formation of a triangle, the sum of the length of any two sides of a triangle must be greater than the third side. If it is not following that the sum of the two sides is not being greater than the third side, then the triangle formation is not possible. So it's a very important property that says that sum of the two sides of a triangle must be greater than the third side. And we can also add one more point to it. We can conclude that the difference of any two sides, okay, another important result we can remember is the difference of any 2 points, the difference of any 2 points, any two sides of the triangle is less than the third side. In the above, we learned that the sum of the length of any two sides of the triangle should be greater than the third side, and in the below part, another result says the difference of any two sides of a triangle should be less than the third side. Okay. So suppose, let's say we have an example here that there are 3 positive numbers, okay, and if these numbers could be possibly length like 2, 10 and 15, and it is being asked that will it be possible? So if we see the 2 and 10, if we take the sum of 2 and 10, it's being less than 15, and that's why the formation of triangle is not possible here. The formation of triangle is not possible here. Let's move to the another triangle which we have talked about it. That's basis of angle. We have a 190-degree angle in a triangle, then it's said to be as right angle triangle. And the next property which we are talking about is very, very, very important. A lot of questions can be, lot of word problems can be solved of triangles on the basis of this property. So let's hear this property very carefully and understand it. So let us consider that a right angle triangle is there. Okay. Now in the right angle triangle, we have 3 sides. Now the lower one is being said to be as base. Generally we write B for base. Then the perpendicular one with the base is called as height. Okay. Or sometimes we say it to be as perpendicular. Why? Let me tell you about that. We represent it with a P because hypotenuse also represent with H. So height and hypotenuse will get a confusion. So always remember we can use the perpendicular instead of height. Although that is the perpendicular only. The height is basically always taken as perpendicular. So hypotenuse as H, perpendicular as P, and base as B.
So these are the three sides of the right angle triangle. And always remember the side opposite. Now sometimes what happens, the students get confused that which one is the hypotenuse. So always remember the side opposite to the right angle. Means if you have a 90-degree, just from this vertex look at the side. So whichever the side you are able to see from the right angle, okay, that would be the hypotenuse. That side is going to be your hypotenuse. Okay. So if we have a like this, then from this angle we'll be looking. So this one would be our hypotenuse. So we will be considering the hypotenuse to be the side opposite to the right angle. Alright. So as I was talking, that this property which right now we are going to learn, that's very, very important. And it has huge application. That's the name is Pythagorean theorem, or we also say it's Pythagoras theorem. He was a great mathematician, very genius. See, in the era of 570 BC and 495 BC, in that time he discovered it. And still we are using. So you can think of the brilliance. His mind was so much sharp. So let's see what this theorem is all about. So according to Pythagoras theorem, as we have right now learned that if we have a right angle triangle, so the below one is your base, this one is our perpendicular, and this one is our hypotenuse. Okay. So as per the understanding of base, perpendicular and hypotenuse, there has been a relation. A relation is being given for a right angle triangle. I am only talking about right angle triangle only. It says that if we take the sum of the squares of sum of the squares of the base and perpendicular, then it is equal to the hypotenuse square. So we can say that base square, that is b square plus p square or p square plus b square, not an issue, is always equal to h square. For a right angle triangle, this is said to be as your Pythagoras theorem, which says hypotenuse square is equal to the base square plus perpendicular square. And therefore, if we represent these sides with a, b, c, so we can say that c square should be equal to a square plus b square. All right. So next, some more properties, more results. What we can learn is, like from this Pythagoras theorem, we can say that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. So whenever we get a right angle triangle, the hypotenuse is going to be always the longest side. Next is that of all line segments that can be drawn from a point to a line not containing it, is the perpendicular line segment is the shortest. What does it mean? Suppose let's say we have a line over here. Let's say suppose a line L is there, and let's say suppose we are making a triangle and we are taking suppose a point over here which is not lying on this line. Okay, I am taking a point which is not lying on this line L. Now if I draw a lot of different lines from here, different lines, now out of all the different lines I am drawing here, the line which is going to be perpendicular to the base one, that's going to be the shortest.
It says of all the line segment that can be drawn from a point to a line not containing it, this point is not containing on this line, the perpendicular line segment is going to be the shortest. This line is going to be the shortest one. Others will be longer than that. And next is Pythagorean triplets. So Pythagorean triplets means that we have some standard, we can say that three numbers have been taken in an order, okay, and they have been forming the right angle triangle. They have been forming a right angle triangle, okay, like 3 4 5. So 3 4 5, it's become a Pythagorean triplet. How? Because what we find is that if we do a 5 square, it would be equal to 3 square plus 4 square. 5 square is 25, 3 square is 9, 4 square is 16. So 16 plus 9 is equivalent to 25. So this becomes a Pythagorean triplet. So we can say that three positive integers a, b, c, let's say, in the very same order are said to be forming a Pythagorean triplet if the condition is that c square is equal to a square plus b square. That means the c is representing as your hypotenuse and the other are the two sides of the right angle triangle. So we have like the examples 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 12, 35, 7, 27 is all are the Pythagorean triplet. So we can check if any three numbers are being provided to us. We can check if it follows hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. That means it forms the Pythagorean triplet, otherwise not. Alright students, so let's check this one. So example says in a right triangle ABC, the lengths of the legs are being given. In a right angle triangle, let's say we have a right angle triangle here, the lengths of the legs are given. Find the length of the hypotenuse. We need to find the hypotenuse if the sides being given, let's say A as 6 and B as 8. So I think very simple, very cool. So we can simply find h square is equal to a square and plus b square. So we can write 6 square plus 8 square. 6 square is 36, 8 square is 64. So it gives us 100. Now h square is equal to 100. That means h we will be taking only the positive value. So h is under root of 100, that gives 10. Okay, under root means what is the number which is multiplied 2 times so that we get 100. It's called as root or the square root. So 10 into 10 we get 100. So 10 centimeter is going to be our hypotenuse. Okay, so hypotenuse length is 10 centimeter. Okay, so let's get start with our practice questions. So let's start with the quiz time. So first question on the screen, here we have, which of the following is the set of measures of the sides of a triangle? So you have given four options students. जल्दी से पॉज करो और फटाफट चैट बॉक्स में लिखो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. Which of the following is the set of measures of the sides of a triangle? Be quick, फटाफट. A, B, C, D. फटाफट दिमाग में कैलकुलेशंस करो फटाफट. All right then, let's see. So first option, it says 8, 4 and 20. So if you add 8 and 4, क्या आ जाएगा 12. 12 लेस देन हो गया 20 से. So A की संभावना तो वैसे ही खत्म हो गई. Okay, next
बी पे चेक करते हैं, 9 + 17 ये आएगा 26, सही है, 26 ग्रेटर देन 25। चलो ठीक है। अब अगर हम लोग 17 + 25 करते हैं तो ये आएगा 7 + 5 12, कैरी 1 2 1 3 एंड 1 4, 42 ग्रेटर देन 9, ये भी सही है। नेक्स्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन ले लिए, ये दोनों भी ले लिए, अब बच गया 9 और 25, ऐड कर देते 25 और 9, ये आता है 34। ये भी भाई बड़ा है 17 से, तो ये तो पक्का है बी। चेक कर लेते हैं बाकियों को भी। 11 और 16 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27 इक्वल टू 27 नहीं, नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क। वी वांट इट टू बी ग्रेटर, not even equal. So we have only one option, that is B. Okay, so B is the correct one. So very well done, my lovely students. Let's go for the second one. In which of the following cases a right triangle cannot be constructed? कह रहा है कौन सा केस ऐसा है जहां राइट ट्रायंगल नहीं बन सकता है? पॉज करो जल्दी से वीडियो को और जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है। All right, let's look on to the answer. That's C. तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि राइट ट्राइंगल बनेगा या नहीं? सो विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो सबसे बड़ा साइड है 13, ये 13 का स्क्वायर करते हैं, दैट इज 169। ठीक है, बाकी 12 और 5 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐड करेंगे तो आएगा 169। बिल्कुल सही है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहां कह रहा है कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, तो ये तो सही है। ओके, दूसरा 8 6 एंड 10, फिर से देखते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हमने अभी देखा था, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये तो 100 बन रहा है। दैट मीन्स ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। नन ऑफ दीज तो ऐसा है नहीं। थर्ड वाले पे देखते हैं, 5 9 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ रहा है, और 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 9 स्क्वायर इज 81, if we take the sum it's 106, so 121 is not equal to 106, so we will go with the second option. Okay, चलो फिर, मजा आ रहा है? जल्दी से ढोलक लिखो भाई, तो पता तो चले कि मजा आ रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द अननोन x। इस फिगर से बताना है कि x जो अननोन है इसकी वैल्यू कितने होने वाली है। फटाफट बताओ एकदम जल्दी से। 15 9 और x, 10 सेकेंड्स है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. करेक्ट आंसर इज 12। करेक्ट आंसर इज 12। कैसे कर लें? बहुत ही आसान। राइट एंगल इधर है तो इसके ऑपोजिट क्या बन गया, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 9 स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर इज 225, 9 स्क्वायर होता है 81, ये एक्स स्क्वायर हो गया। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 225, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 1 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, और ये बच गया 144। अब एक्स स्क्वायर अगर 144 है तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12। चलिए
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब देखो इसका क्या डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या डेली लाइफ में क्या इसका कुछ यूज हुआ है? यस, बहुत. यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, यहाँ पे एक समय में आज भी वहां पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहां से जो ग्रेट हमारे हिस्ट्री में मैथमेटिशियंस रहे हैं वो इस पाइथागोरस के थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए सन की दूरी को निकालते थे. दैट हाउ फार द सन इज. और उसी पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम लोग और भी चीजों का हाइट्स निकाल सकते हैं, बेस लेंथ निकाल सकते हैं. सो कैसे देखते हैं. सो सवाल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है. तो पहला एक सवाल है, a ladder is being placed in such a way that its foot is 15 meter away from the wall and its top reaches a window 20 meter above the ground. लेंथ ऑफ द लैडर कितना? तो इसको जब हम लोग को ऐसे सवाल हो ना, सो लेट्स ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई टू मेक द फिगर आउट ऑफ इट. द डायग्राम्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो कह रहा है क्या, इट इज सेइंग दैट भाई एक लैडर था. Okay, a ladder is being placed in such a way that its foot is 15 meter away from the wall. तो मान लेते हैं ये हमारा दीवार है, ठीक है. यहाँ पे एक लैडर रख देते हैं, ठीक है. एक लैडर रख दिए यहाँ पे, सीढ़ी. ओके, सभी के घरों में होता है. तो इस वॉल के सपोर्ट लेकर इस सीढ़ी को रख दिया. अब सीढ़ी का जो फुट है ये कह रहा है यहां से वॉल से 15 मीटर के दूरी पे है. अब वॉल जो होती है बेस के साथ हमेशा, फ्लोर के साथ हमेशा 90 डिग्री बनता है. ओके, अब कह रहा है कि भाई अगर हम लोग सीढ़ी को इस तरह से रखते हैं, देन इसकी जो टॉप है, लैडर का जो टॉप है वो रीचेस अ विंडो, ठीक है, वो खिड़की तक पहुंच जाता है जो 20 मीटर के दूरी पर है. जो 20 मीटर के दूरी पे एक खिड़की है वहां तक पहुंच जाता है. तो कह रहा है लेंथ ऑफ द लैडर निकालो. बताओ बच्चों कितना इजी हो गया अब सवाल. मुझे तो लगता है बहुत लोगों ने सवाल सॉल्व भी कर दिया होगा. तो चलो फिर आंसर देखा जाए इसका. सो बिल्कुल इसका आंसर होगा हमारा 25 मीटर. कैसे? तो देखो ये 15 है, ये 20. तो ऐसा नहीं कि 20 प्लस 15 कर दें, नहीं. वी हैव टू लुक फॉर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का हो गया 225. ये आ गया 625 एच स्क्वायर. और एच हमें पॉजिटिव लेना है, सो विल टेक 25 मीटर. सो देखो कितना किफायती है ये, राइट. सो ये हमारे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट कर सकता है व्हेन वी गेट अ परपेंडिकुलर एंगल और राइट एंगल फॉर्मेशन होगा. So let's look into the next question. The foot of a ladder is 6 meter away. फिर से एक लैडर वाला ही एक सवाल है. The foot of a ladder is 6 meter away from the wall and its top reaches a window 8 meter above the ground. ठीक है. Now, if the ladder is shifted in such a way that its foot is 8 meter away from the wall
to what height does now the top reaches? Chalo, right now you have to solve it. Take a pause, go through the question, and then solve and write the answer on the comment box. Okay, chalo then. Let's reveal the answer. That's a 6 meter. क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है the foot of a ladder is 6 meter away. Okay, let's say this is 6 meter away from the wall and its top reaches a window which is 8 meter. Okay, and ये कह रहा है कि if the ladder is being shifted in such a way that its foot is 8 meter. अब ladder को क्या कर रहे हैं ना कि ladder को ऐसे कुछ ले जा रहा है. ठीक है, तो ladder जो है अब 6 मीटर के बजाय 8 मीटर शिफ्ट हो गया. ओके, 8 मीटर शिफ्ट हो गया. तो क्या लैडर की लेंथ घट गई क्या? नहीं, लैडर तो उतना ही है, बट क्या होगा कि पहले इतना हाइट पे था, अब वो थोड़ा घट गया. तो कितना घटेगा? लैडर का लेंथ सेम है, इसको बिना सॉल्व करके भी कर सकते हैं. पहले 6 यहां था, 8 इधर था, अभी इधर 8 हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑब्वियस 6 होगा, बिकॉज लैडर का लेंथ तो सेम ही रहना है. ओके, लैडर का लेंथ सेम ही रहना है, और लैडर का लेंथ हमसे पूछा भी नहीं है. सो ये अगर 8 तो ये भी कितना हो जाएगा? 6. ओके, वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से लैडर के बहुत सवाल बनते हैं. A ladder 50 decimeter long when set against a wall of a house just reached the window at a height of 48 decimeter. Now, how far is the lower end of the ladder from the base of the wall? इस बार हमें पूछा है कि भाई ये वाला लेंथ कितना होने वाला है. ओके, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ये सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है. सो हाउ फार इज द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल? वॉल के बेस से कितनी दूरी पे होगा? अगर हमारा लैडर 50 डीएम का है और जो विंडो है वो 48 डीएम पे है. Let's go and look into the answer, and that's the answer is 14 dm. So कैसे करें? बहुत ही सिंपल. I hope everybody have understood here. So 48 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर कर देंगे. ऑलराइट, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं. 50 प्लस 48, 50 माइनस 48, ये a प्लस बी ए माइनस बी यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे या फिर चलो सिंपली करते हैं. मे बी बहुत लोगों को ये a प्लस बी ए माइनस बी याद नहीं होगा, सो सिंपली हम लोग इसको कर लेते हैं कैलकुलेशंस. 50 स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग? 48 into 48, 8 8 is 64, 6, 8 4 is 32, and 6 38, 8 4 is 32, carry 3, 4 4 is 16, 3 19. Okay, so ये आ जाएगा 4, 8 and 2 10, carry 1 9 3 12 और एक 13, carry 1 2304, 2304. सो अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 6 9 2 2 9 6, सॉरी ये आएगा 431, ओके सॉरी 196.
So x is equal to क्या होगा, अंडर रूट 196, दैट गिव्स 14. So ये आंसर देगा 14 decimeter. Okay, 14 decimeter would be the answer. Let's move to the next question. Chalo. A man goes 15-meter due west and then 8-meter due north. A man goes 15-meter due west and then 8-meter due north. Okay. So, how far is he from the starting point? How far does he from the starting point? एक आदमी है जो 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है and then 8 मीटर नॉर्थ की तरफ. So this is, let's say, north, south, east and west. Think upon it and get the answer. Make a pause, solve it and write the comment what the answer you are getting. All right, let's reveal the answer. So answer is 17 meter. ठीक है. So कैसे होगा? A man goes 15 meter due west. ठीक है, मान लेते हैं यहां से गया इधर, कितना गया 15 मीटर, फिर क्या कह रहा 90 डिग्री से चेंज करेगा अपना डायरेक्शन ताकि वो नॉर्थ में जा सके 8 मीटर. सो यहां से यहां तक का दूरी पूछा है. ओके, यहां से यहां तक का मतलब हाइपोटेनस पूछा है. तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, बहुत ही सिंपल. h square is equal to 225 plus 64, that is 549, 628, 289, that is under root 289 gives us 17 meter. Okay, so I hope everyone has understood now that how we can do the Pythagoras theorem, how we have used the properties of inequalities, where we have understood that the sum of the two sides of the triangle should be greater than the third side and the difference of the two sides must be less than the third side. So this property we have learned, and the next is very important, that's Pythagoras theorem, which says in a right angle triangle hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, so hope you have all learned both the properties very well. So see you then in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you so much.